everyone, welcome back to my YouTube channel. So first of all, the benefits of watching this video is in days 33 पूरा conceptual understanding will sit in your brain. And then second most important, November 24 में जो क्वेश्चन पेपर्स ICAI ने दिया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट मॉड्यूल में से नहीं था, पूरा conceptual based था. So this video is purely conceptual based. I want you guys to watch this video till the end because each and every adjustment that we are going to learn in this is interlinked. तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होना है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई कैन गारंटी यू दैट एनी क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम इंडिया 33 you will be able to solve that question. Okay, without wasting any more time, let's get into the standard. So India's 33 talks about, ठीक है, first earnings का earnings divided by number of shares. EPS is that only, you will get EPS figure. ठीक है, first we will discuss about earnings now. तो earnings कुछ भी नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन. तो पहले EBIT रहेगा एंड देन उसमें से इंटरेस्ट निकाल देंगे, EBT आता है, उसमें से टैक्स निकाल देंगे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आता है. नाउ दिस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, ये सब बचपन में भी अपन पढ़े, CA इंटर में भी अपन पढ़ चुके हैं. बट यहाँ पे वी विल गो वन स्टेप डीप. इंडियाज़ 109 व्हाट इट सेज. इंडियाज़ 109 बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी. ठीक है, can also be classified as liability, can also be classified as equity. What? This preference shares. Okay, this preference shares is there, no? This preference shares can also be classified as liability as per Ind AS 109. Okay, it can be classified as liability and also equity. ठीक है, अगर वो liability classify हो गया, then in that case whatever interest and dividend that you pay will go and sit here in this interest. पहले ही अपन डिडक्ट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे एंड तक वेट नहीं करते. इफ़ इट इज़ क्लासिफाइड एज लायबिलिटी, अगर वो इक्विटी क्लासीफाई हो गया तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड हियर. क्लियर नो? सो दिस इज इंडियाज़ 105. क्लासिफिकेशन कैसा होता क्या होता है इंडियाज़ 109 में पढ़ेंगे. ठीक है, EPS में बस ये देखना कि वो लायबिलिटी है या इक्विटी है. इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लायबिलिटी देन इट विल बिकम ए फाइनेंस कॉस्ट एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस इंटरेस्ट. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स. स्टैंडर्ड बोलता है कि जो भी लाइक ओवरऑल ईयर में है, पहले ओपनिंग इक्विटी शेयर्स रहता है, ओपनिंग बैलेंस रहता है, तो ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल शेयर्स दिए हैं एंड देन बायबैक भी हुआ ईयर में एंड देन यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस as at the year end. This is the closing balance at the year end. But standard बोलता है कि you should get the accurate value, accurate EPS. To get the accurate EPS, we need to find out the weighted average number of shares. ठीक है, at that point of time you should calculate, you should know what are the shares outstanding during the period. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, outstanding at the year end आया. ठीक है, this is not outstanding during the period. ठीक है, to understand, to get the number of shares outstanding during the period, we have to use weighted average number of shares. That is, you will take number of days as a basis to calculate weighted average. ठीक है, तो that is done here, right side में ही आना, opening balance. So this is from January to December. ठीक है, opening balance 1 lakh shares, 1 lakh shares outstanding for how many months. यहाँ पे एक issue हो गया 1/5 में. ठीक है, 1st May को additional shares have been issued. So for a period of 4 months, for a period of 4 months 1 lakh shares have been outstanding. ठीक है, 4 months, 4 divided by 12, this many shares are outstanding for a period of 4 months. ठीक है, now अभी additional 10,000 shares have been issued, so 1,10,000 is outstanding for how many months. 1/8 को बायबैक हुआ है. ठीक है, तो 5 से लेके 8 तक, 5, 6, 7 for 3 months. You see, 3 months. Okay, for 3 months 1,10,000 shares are outstanding. ठीक है, फिर 1/8 को बायबैक हो गया 5,000, तो ना 1,05,000 शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 5 months. ठीक है, 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 5 months. सो 1,05,000. सो 1,10,000 में से 5,000 डिडक्ट करें अपन बिकॉज बायबैक हो गया एंड देन 1,05,000 शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 5 months. देन वी विल गेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. इसको नंबर ऑफ शेयर्स का डाल देना एंड देन अर्निंग से डिवाइड कर देना. ठीक है, दिस इज ईजी. दिस इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज dilution and anti-dilution. Okay, there's one concept called dilution and anti-dilution. First we will discuss this. ठीक है, जस्ट नाउ वी रेड अबाउट बेसिक EPS, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. यहाँ पे
what is this, profit is 20 lakhs, okay, and then outstanding shares are 10, right? Now 20 lakhs divided by 10, you will get basic EPS. Done. डाइल्यूटिव EPS ना, यहाँ पे वी विल कंसिडर जो भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स इन द फ्यूचर, right? Even we will consider even those potential equity shares also as if those potential shares have been issued today itself, okay? Then here if you see there is convertible equity shares of 2 lakhs, okay, we will consider this 2 lakhs has been converted into equity shares, so total 12 lakh shares ho jata, right? Now this 12 lakh shares we will divide, because in diluted EPS no, we will see what is the effect of EPS in case if those equity shares have been converted. अगर वो equity shares convert हो गया then EPS के ऊपर क्या effect रहने वाला है, ठीक है? तो वो फाइंड आउट करता है diluted EPS, राइट? तो 20 lakhs अर्निंग्स उतना ही रहेगा, 12 lakhs इक्विटी शेयर्स बन जाता, 10 + 2 12 lakhs, देन यू विल गेट EPS. तो यहाँ पे पहले बेसिक EPS टू रुपीज़ था, अभी कितना बन गया, 1.67 बन गया. सो देयर इज़ अ डिक्रीज, ठीक है? इन केस इफ देयर इज़ अ डिक्रीज इन EPS वी कंसिडर दैट एज डाइल्यूट, ठीक है? डिक्रीज रहना चाहिए, ठीक है? ओनली देन डिक्रीज रहना चाहिए, ओनली देन वी से इट इज़ डाइल्यूटिव इक्विटी शेयर्स, ओके. नाउ वी विल सी अनदर एग्जाम्पल जिसमें एंटी डाइल्यूशन का इफेक्ट आता है. वी विल सी व्हाट इज़ एंटी डाइल्यूशन नाउ. पहले बात, कंपनी का लॉस चल रहा है 5 लाख, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज 10. बेसिक EPS में we will not consider the potential equity shares. We will see whatever is outstanding shares. We will divide profit or loss with those outstanding shares. तो कितना आया अपने को, 0.5 EPS आ गया. क्लियर नो, डन. अभी डाइल्यूटेड EPS में 5 lakhs लॉस है न्यूमरेटर में. नाउ डिवाइडेड बाय यू विल टेक 12 lakhs. यू विल कंसिडर इवन दिस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ऑल्सो जो कन्वर्ट हो गया फ्यूचर में. वी विल ट्रीट एज इफ इट इज़ कन्वर्टेड टुडे ओनली एंड सी व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन EPS, ठीक है? तो 12 lakhs लिया, तो यहाँ पे देखे तो ना 0.5 से लेकर 0.41 हो रहा है. दिस इज़ इन माइनस, सो इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग. तुम्हारा EPS एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? इफ़ वी कंसिडर दिस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स नो, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स, इफ़ वी कंसिडर दैम, तुम्हारा EPS बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन एंटी डाइल्यूशन. क्लियर? तो स्टैंडर्ड बोलता है दैट इज़ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, बिकॉज फ्यूचर में जो एंटिसिपेटेड लॉसेस है यू कैन रिकॉग्नाइज दैट, बट फ्यूचर के एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैम. सो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर ऑल्सो, बिकॉज जो तुम्हारा लॉस में चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, तुम्हारा लॉस कम हो रहा है. EPS का ना, EPS का वैल्यू जो है इट इज़ इंक्रीजिंग, सो दैट इज़ एंटी डाइल्यूशन. तो स्टैंडर्ड बोलता है in that case, in case of anti dilution no, you will not give effect to this potential equity shares. अभी ये जो 2 lakhs एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना अपन, वो कंसिडर, वो इंक्लूड ही नहीं करता है डाइल्यूशन EPS में. क्लियर नो? इट विल शो ओनली दिस 0.5. आई होप दिस इज क्लियर. बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, एंटिसिपेटेड लॉसेस अपन रिकॉग्नाइज करते हैं बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स नहीं करते. क्लियर? नाउ लेट्स गो एंड सी बोनस इशू. Okay, so another interesting topic this is, okay. Let's take an example. 1:1 bonus दिया है कंपनी, like for every one shareholder one bonus share is getting, okay. So there are 10,000 equity shares before. अभी all those 10,000 equity shareholders will get another 10,000, so total number of equity shares will become 20,000, okay. So this is in the previous year, this is the current year. In the current year they have given bonus. I hope this is clear. In the previous year we got earnings of 1 lakh, 10,000 equity shareholders the EPS बन गया 10 rupees, right? अभी ये ईयर में ना earnings बढ़ा, ठीक है, 1 lakh से लेके 1,50,000 हुआ, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस बोनस शेयर्स 10,000 से 20,000 बोनस शेयर्स हो गया, बट EPS आया 7.5. Now see, when does a company issue bonus shares? When it is having adequate reserves and it will convert those reserves to equity, and it's a very good sign in the market also, okay. जब तुम बोनस शेयर्स देते हो ना मार्केट में भी, मार्केट प्राइस ऑफ दैट कंपनी विल इंक्रीज, बिकॉज इट इज़ कंसिडर टू बी ए गुड साइन. जो बोनस इशू देता है इट इज़ कंसिडर टू बी ए गुड साइन. तुम्हारे पास बहुत सारे रिजर्व्स है एंड देन यू वांटेड दैट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड दे रहे हो,
इन अ वे, ठीक है। बट यहाँ पे EPS देखो तो ना रिड्यूस हो जा रहा, 10 से लेके 7.5 हो रहा, बट एक्चुअली में तुम्हारा प्रॉफिट्स बढ़े हैं, ठीक है। 1,50,000 हुआ, विच इज़ 50% इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, अभी 1,50,000 हो गया, बट तुम्हारा EPS जो है दैट इज़ फॉलिंग, ठीक है। नाउ लेट्स से आई एम एन इन्वेस्टर, ओके, आई विल सी द कंपनी स्टैटिस्टिक्स, ओके, आई विल सी द EPS तो पहले लास्ट ईयर तो 10 था, अभी तो 7.5 दिख रहा है, मतलब EPS रिड्यूस हो गया। तो आई विल मेक एज एन इन्वेस्टर, आई विल मेक अ डिसीजन नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, बट इनफैक्ट दैट कंपनी इज एक्चुअली डूइंग गुड, उसको अभी और अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा, बिकॉज एंड ऑल्सो बोनस भी दिया है, तो मार्केट में तो उसका अच्छा नाम रहना चाहिए, ठीक है, राइट। बट EPS तो गिर रहा है, तो स्टैंडर्ड बोलता है जब भी तुम बोनस शेयर्स इशू करते हो, प्रीवियस ईयर का भी इक्विटी शेयर्स रीस्टेट कर दो। इट सेज रीस्टेट प्रीवियस ईयर EPS एज वेल, कंसिडर बोनस शेयर्स हैव बीन इशूड इवन इन द प्रीवियस ईयर, राइट। नाउ प्रीवियस ईयर में 10 था ना, नाउ रीस्टेट करके अपन बोलते हैं कि 20,000 equity shares as of previous year opening balance, right? Then we will get EPS 5. Now in the current year 1,50,000 हुआ, 1 लाख से लेके 1,50,000 बढ़ गया था, इक्विटी शेयर्स तो 2020 सेम है। नाउ इफ़ यू सी EPS has increased, what as an investor I'll see, अरे लास्ट ईयर तो 5 रुपये है, अभी तो 7.5 बन गया, तो there is an increase in EPS. As an investor I'll go and invest in the company. You're getting my point? सो वेन एवर यू गेट अ बोनस इशू नो, इसमें टाइम एडजस्टमेंट या वेटेड एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, कितना पीरियड के लिए है होल्डिंग, वो सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी बोनस इशू आता है, यू हैव टू कंसिडर दैट बोनस शेयर्स हैव बीन इशूड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, राइट। सो इसमें नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स का नहीं आता है, ठीक है। वेन एवर बोनस इशू कम्स, यू हैव टू गो रीस्टेट द प्रीवियस ईयर फिगर्स ऑल्सो to get an accurate figure so that it becomes easy for the investors to compare, right? I hope this is, you guys understood this one. Now there is an example, this is from ICAI test your knowledge question only. So opening balance देखे तो 10 lakhs है, there is an issue in the month of February, 2 lakhs issue करे, and then यहाँ पे bonus देखे तो 1:4, 1:3, for every 3 shareholders 1 share bonus has been issued, that is on 31st August. Now in the month of November again there is another issue of 2,50,000. Okay, now we have to calculate the weighted average. Okay, तो बोनस इशू हुआ 31st अगस्त को, राइट। इसका इफेक्ट अपन ये दोनों शेयर्स को भी देना, ठीक है। नाउ वी विल गो टू आवर एग्जांपल, ठीक है। बोनस इशू हुआ करेंट ईयर में, राइट, 10,000 shares have been given. What we did, we went back to previous year, we added 10,000 in the previous year also, we increased the share in the previous year, right। Now here in this example bonus दिया है 31st अगस्त में, करेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फ्रॉम 1st जनवरी से लेके ये जो 30th सितंबर तक जो भी शेयर्स है, यू शुड गिव एन एडजस्टमेंट टू दैट ऑल्सो, यू शुड इंक्रीज दो शेयर होल्डिंग ऑल्सो, राइट। बोनस एलिमेंट वहाँ पे भी आएगा, and then it will go to previous year also, and then you will give the and then you will restate the previous year figures also. I hope you understood this point, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन बोनस एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओह शिट, यहाँ देखो 1st जनवरी को there is 10 lakhs opening balance, 10 lakhs opening balance is outstanding for how many months, 28th February तक outstanding है, because after that 2 lakhs additional shares have been issued. So 10 lakhs is outstanding only for 2 months. 10 lakhs, 2 months. Clear now? We will see what is 4/3. I'll explain. Now next 20th February, 2 lakh shares have been issued. तो पूरा बन गया 12 lakhs. Right? 10 lakhs plus 2 lakhs. This is outstanding till August. March, April, May, June, July, August. 6 months. So 6 divided by 12. Now यहाँ पे बोनस इशू हुआ, टोटल शेयर्स कितने हैं, 12 lakhs है। So for every, yeah, if you see, 1 share has been issued for every 3 shares, 1 share has been issued, ठीक है। So 12 lakhs divided by 3, which will be 4 lakhs. Okay. Now if this 4 lakhs is also added, 12 lakhs को 4 lakhs add करें तो 16 lakhs हो जाता। 16 is outstanding till August, September, October, November, 3 months. 16 into 3 divided by 12, यहाँ पे कुछ बोनस एलिमेंट या कुछ भी नहीं रहता,
So that is outstanding for a period of 3 months. Again, another 2,50,000 shares have been issued November and December for 2 months. Okay, 30th November को December 1 month के लिए that is outstanding 18,50,000. I hope this is clear. Now we will see 2 examples to understand. So bonus 1 share for every 3 shares held. 1 share दिया for every 3 shares. Okay. So total कितना बन गया अभी? टोटल बन गया 4. अर्लियर कितने थे? 3. क्लियर नो? दिस इज़ प्रीवियस होल्डिंग. अगर मैं प्रीवियस में 3 शेयर होल्ड करता था, मेरे को एडिशनल वन शेयर बोनस मिला, तो अभी मेरे पास कितने हैं? 4. क्लियर नो? अनदर एग्जाम्पल, मैं होल्ड करता था 2 shares for every 3 shares held, राइट. आई यूज टू हैव 3 shares बिफोर, दे गेव मी 2 shares बोनस. सो टोटल कितने बन गए मेरे पास? 5 डिवाइडेड बाई 3. नाउ अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट हियर. 1:3 बोल रहा है. अगर मेरे पास 3 शेयर्स होते थे पहले, अभी कितने बन गए? 4 डिवाइडेड बाई 3. न्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड. ओके, perfect. So that's how you should give that bonus element का adjustment to the previous year figures also. Okay, previous year figures and prior year figures also, because bonus is not issued on 1st January. मिड ऑफ द ईयर में बोनस को इशू करे तो उसके पहले जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ना, उसको भी बोनस एलिमेंट का एडजस्टमेंट देना रहता. दैट इज दिस एडजस्टमेंट 4 डिवाइडेड बाई 3. परफेक्ट. यस सर, परफेक्ट. नाउ लेट्स सी राइट शेयर्स. Okay, see, now the company wants funds. When a company wants funds, it can go to bank, right? It will get, now if a company needs 10 lakhs, it can go to bank and get loan of 10 lakhs. In the same way, company can give right shares to its own equity shareholders, to its own employees, okay, for a reduced price, and it can get its 10 lakhs from there also. This is like another source of funds. Okay, now when a company needs funds, it will issue right shares to its own equity shareholders and employees at a price less than the market price. So basically in right share what happens is, when a company is issuing shares, अगर market price 60 rupees है, then अपने shareholders को, अपने employees को वो 30 rupees में right दे देता है. ठीक है, it will give right to its employees कि purchase करो 30 rupees में, right. Market price is 70, but right issue is only for 30 rupees. Okay. Now let's understand the practical scenario of this with an example. Market price है 60 rupees भाई. यहाँ पे मार्केट प्राइस दिख रहा 60 rupees. फाइन, राइट इशू दे दिए 30 rupees में, अपने ही शेयर होल्डर्स को 30 rupees में परचेस खरीदने के लिए दे दिए. बट व्हाट इज़ द बेनिफिट? कैन यू टेल मी लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज़ द बेनिफिट? डोंट टेल मी इट इज़ 30 rupees. अरे मार्केट में 60 rupees है, मेरे को 30 rupees में मिल रहा, बेनिफिट 30 नहीं. अपन फर्स्ट स्टेप, वेन एवर यू आर डूइंग राइट इशू, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना रहता कि व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस आफ्टर द राइट इशू. सी, वेन एवर कंपनी इज गोइंग फॉर अ राइट इशू, इट इज़ गिविंग एट अ reduced प्राइस, राइट, टू इट्स ओन एम्प्लॉयज. इट इज़ इशूइंग शेयर्स एट अ reduced प्राइस. मार्केट प्राइस में 60 rupees है, अपने ही शेयर होल्डर्स को 30 rupees में दे रहा, तो इट इज़ इशूइंग एट अ reduced प्राइस. तो इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन द मार्केट में वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा. तो उसका शेयर प्राइस जो है दैट विल कम डाउन इन द मार्केट. तो फर्स्ट स्टेप यू शुड सी आफ्टर द राइट इशू व्हाट इज़ द शेयर प्राइस in the market. You need to find out what is the post right issue, post price of post right shares, whatever that is. Post right, what is the price of that particular share, you will have to find out. Okay, that is the first step. How do you do that? It's simple. यहाँ पे कितना, 1 right issue for every 4 shares held. ठीक है, 4 shares पहले थे, उसका वैल्यू 60. अभी 1 शेयर दे रहे, उसका वैल्यू 30 में दे रहे, तो टोटल कितने होंगे? 4 + 1. So this is how you will find out the what is the price after post issue. यहाँ पे देखो 4 into 60, 1 into 30 divided by 4 + 1, that is 5 is 54. So now if you see 54 is the price, right? What is the right issue? Purchase price is 30. So actual benefit that they are getting is 24, not 30. The first step that you should do is calculate what is the price after the right issue, because that is the benefit that particular right holder is getting. Okay, अभी जो मार्केट प्राइस 60 rupees है वो बेनिफिट नहीं होता. राइट इशू एक्सरसाइज करने के बाद जो प्राइस मार्केट में शेयर का है, राइट, दैट इज़ द बेनिफिट दैट पर्सन विल बी गेटिंग. सो यहाँ पे अपने को क्लियरली मालूम चल रहा कि 54 हो रहा आफ्टर द राइट इशू, देन 30 rupees को मैं परचेस करा, तो बेनिफिट इज़ 24.
ठीक है. Now here you need to understand जो 24 है, this is also treated as bonus element because यहाँ पे दे आर गेटिंग दिस विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है वो लोगों को, पैसे दे रहे हैं बस 30 रुपीज़, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रीटेड लाइक ए बोनस एलिमेंट. ये बोनस एलिमेंट को सेम बोनस अभी तक जो पड़े ना बोनस का, उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे भी देना रहता, सेम एडजस्टमेंट यहाँ पे देना रहता है इसको. आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. ओके. सो दिस एग्जाम्पल दैट इज़ देयर नो, दैट इज़ एक्चुअली देयर इन द मॉड्यूल टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन, दैट इज़ ओके. 24. सो बोल रहा है कि मार्केट प्राइस 60 रुपीज़ है, राइट इशू इज़ 1:4. मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट इशू हैज़ बीन गिवन ऑन 31 मार्च, मिड ऑफ द ईयर में राइट इशू हुआ, राइट. एंड देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 18 लाख इक्विटी शेयर्स. दिस टू इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. प्रॉफिट कितना, एंड देन प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर. ओके, यू कैन सी इट इज रीस्टेटेड. वी विल डू दैट. तो पहला स्टेप अपन प्राइस आफ्टर राइट इशू फाइंड आउट कर लिया, विच हैज़ कम टू 54. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, नाउ कैलकुलेट हाउ मेनी शेयर्स वुड हैव बीन इशूड इफ देयर इज नो डिस्काउंट, दैट इज 54. ओके. नाउ लेट्स फाइंड आउट, अगर 54 को इशू करता तो कितने शेयर्स इशू होते थे. वी शुड फाइंड दैट आउट. ठीक है. यहाँ पे 30 रुपीज़ कलेक्ट हो रहा. हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स दैट इट इज़ इशूइंग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 18 lakhs. 18 lakhs divided by 4. No, that is the right issue. No, 18 lakhs divided by 4, you will get 4,50,000 shares. 4,50,000 से 30 rupees into 30, because we are getting 30 rupees, right? And then you divide that by 54, you will get total number of equity shares that have been issued for a consideration. ठीक है. For that consideration that we received, only 2,50,000 shares would have been issued. But कितने actual shares issue कर रहे हैं, 4,50,000 shares issue कर रहे हैं, right? So the difference between these 2 lakh shares, बट एक्चुअल शेयर्स इशूड इज़ 4,50,000. 2 लाख शेयर्स जो नो कंसिडरेशन को दे रहे हैं, दैट इज़ बोनस शेयर्स, दैट विल बी ट्रीटेड एज बोनस शेयर्स. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेन एवर यू गेट अ राइट इशू नो, उसमें से फाइंड आउट करना कि कितने बोनस शेयर्स है. ओके. डोंट डू दिस मिस्टेक ऑफ टेकिंग दिस 60. यू हैव टू फाइंड आउट वॉट इज़ अ पोस्ट राइट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, एंड देन यू शुड सी वॉट इज़ अ बोनस एलिमेंट. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. या then here अपने को bonus element आ गया. now come up, now we will solve this is also given in the question itself. previous year में 6,30,000 profit था, current year में 8,75,000 profit है. outstanding shares है 18 lakh, and then plus right issue 4,50,000. इसमें से 2 lakh is bonus, right? this is right issue, this is bonus. we have seen this. okay, let's understand. चलो 18 lakh shares current year and previous year, this is perfect, nothing to worry there. ये ईयर में राइट इशू हुआ 31 मार्च को. 31 मार्च को राइट इशू हुआ. यहाँ पे वी विल कंसिडर ओनली 2,50,000 शेयर्स, बिकॉज आउट ऑफ दैट 4,50,000 ऑफ राइट शेयर्स, 2 lakhs इज कंसिडर टू बी बोनस शेयर्स. सी, वी हैव गिवन एडजस्टमेंट इन द प्रीवियस ईयर ऑल्सो. एंटायर 2 lakhs वी हैव considered in the previous year without any time value. यहाँ पे 31 मार्च का 9 divided by 12, 3 divided by 12 कुछ भी नहीं. we will consider as if the bonus shares have been issued in the previous year itself, previous year starting date, right? so bonus का तो I hope it is clear. बट राइट इशू में वैसा नहीं होता. अगर 31 मार्च को राइट इशू हुआ, आउटस्टैंडिंग ओनली फॉर 9 months. 31 मार्च से अप्रैल से आउटस्टैंडिंग है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. so those right shares are outstanding only for a period of 9 months. the same is considered here, only for 9 months. 2,50,000 into 9 divided by 12, right? so total number of shares हो गया 21,18 plus 220 plus 1,87,000, 21,87,000. 18 plus 2 lakhs 20,000. so we got the restated EPS also. this is EPS for the current year. I hope right issue is also clear for you guys. so whenever right issue comes, you have to see what is the bonus element in that right issue, right? Perfect. Options and variance is nothing but you are giving a right for another person to purchase certain number of shares at a particular price. ठीक है.
वो राइट दे रहे, whether that person will exercise or not, it's their attack. But in basic EPS, no effect. But in diluted EPS, no, you will consider that that person has exercised the option and equity shares issue कर दिए उसको, right? In diluted EPS, we will consider this as potential equity shares. Clear, no? Issue certain number of equity shares at average market price. ठीक है, for this we will understand what is this fairly price and all, no? We will understand this with an example. ठीक है, 1 लाख वारंट्स दिए 45 पर शेयर को, एवरेज मार्केट प्राइस है 45. अगर मार्केट प्राइस भी 45 है, तुम उसको वारंट दे रहे वो भी 45 में, तो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द डाइल्यूटेड EPS. क्लियर नो? बेसिक में तो कैसा भी नहीं आता. इवन इन डाइल्यूटेड ऑल्सो इफ देर इज़ नो बेनिफिट, मार्केट प्राइस भी 45, तुम भी उसको दे रहे 45, देर इज़ नो बेनिफिट. ओके, so this will also be not considered in the diluted EPS. Now सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, वारंट दिया 30 रुपीज़ में, राइट? उसको राइट है 30 रुपीज़ में परचेस करने का, मार्केट प्राइस है 37 रुपीज़, देर इज़ अ बेनिफिट. सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग EPS, कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड EPS. तो यहाँ पे भी देखना चाहिए अपन, अगर वो 37 को इशू करता तो कितने शेयर्स इशू होते, राइट? यहाँ पे 1 लाख वारंट इशू दिया फिर 30, 1 लाख इंटू 30, 1 लाख इंटू 30, अगर वो 37 में दिया होता तो कितने शेयर्स? 81,000 शेयर्स आए. तो बैलेंस वो जो 19,000 शेयर्स है ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज बोनस. डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स इज 18,000 एंड देन that will be treated as bonus element. Those 19,000 shares will be treated as bonus element, and ये 18,000 को ना previous year, prior month, वो सब में adjust करना रहता bonus element, same like how we have done in right issue. Clear, no? Perfect. See, dilution and anti-dilution तो अपन कर लिए. Now we will do contingency. Contingency is also very much important, and the same question is actually there. ये देखो, right issue once I'll explain step wise. राइट इशू बात कर रहे हैं अपन अभी. सो वेन एवर यू गिव ए राइट टू योर एम्प्लॉयज़ और टू योर शेयर होल्डर्स टू परचेज इक्विटी शेयर्स एट अ लेस रिड्यूस्ड प्राइस, तो फर्स्ट यू शुड फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू, राइट? अपने को 54 आया, एंड देन कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स दैट कुड हैव बीन इशूड विथ, या यू विल एक्चुअल जो प्राइस मिला उसको विदाउट एनी डिस्काउंट अगर शेयर्स इशू करते तो कितने शेयर्स इशू कर सकते थे for a consideration, and then you should find out the difference between those two. That will be treated as bonus element. Now you should add this bonus element to the previous year and restate the previous year EPS, right? So this is stepwise. Now we will see contingency ka part. Okay, contingently issuable shares. So basically it's a condition. If you meet certain condition in the future, then certain number of equity shares will be issued. ठीक है, इसका बेसिक में कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला, राइट? बट डाइल्यूटेड EPS में ना, it is deemed as if those conditions are satisfied and equity shares have been issued, and then EPS के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है देखते हैं in dilution. Okay, so these shares are not yet issued. They don't have any effect in basic EPS. They don't have any effect in basic EPS. However, diluted EPS में ना, they are considered as if they are already issued. चलो, this example is there in the module itself. तो ये example देखे तो ना, ये बोलता है कि for every retail site opened during the year, 5,000 ordinary shares will be issued. एक रिटेल साइट अगर ओपन करे, दैट इज़ अ कंडीशन. अगर 1 रिटेल साइट ओपन हुआ तो उसके लिए 5,000 शेयर्स इशू करते हैं. तो व्हेन यू विल इशू इक्विटी शेयर्स, व्हेन दैट कंडीशन इज मेट. ओके, टू डेट्स दिया, 1 मई एंड 1 सितंबर, दोनों डेट्स को 1 रिटेल साइट हैज़ बीन इशूड. सो फॉर एवरी रिटेल साइट ओपन यू विल इशू 5,000 इक्विटी शेयर्स. परफेक्ट. चलो, सो एंटायर दिस क्वार्टर वाइज डिटेल्स एक्चुअली इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. नथिंग टू वरी. Q1 में इतना प्रॉफिट, Q2 में इतना प्रॉफिट, ओके, Q3 में इतना लॉस आया, Q3 में, Q4 में प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट. परफेक्ट. नाउ लेट्स सी, रिटेल साइट ओपन हुआ 1 मई में, ओके, विच इज़ फॉलिंग इन द सेकेंड क्वार्टर. परफेक्ट. तो फर्स्ट क्वार्टर इज जनवरी टू मार्च. मे कम्स इन द सेकेंड क्वार्टर, दैट इज अप्रैल, मई, जून. 1 मई को मतलब 2 months. इफ़ यू से 2 months, 2 divided by 3.
5,000 इक्विटी शेयर्स देना, तो इट इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 months, राइट. 2 divided by 3, परफेक्ट. एंड देन सेकेंड क्वार्टर में, सॉरी थर्ड क्वार्टर में, 1st September कम्स इन थर्ड क्वार्टर, दैट इज June, July, August, September. Okay, that comes under third quarter. So this 1 divided by 3 is there, no, it is outstanding only for a period of 1 month. And then यहाँ से 5,000, entire 5,000 you should take. Okay, and then your 1st September वाला is outstanding only for a period of 1 month. So 5,000 divided by into 1 divided by 3. Now we will see in quarter 4, these two are outstanding for the entire period, 5,000 plus 5,000. Perfect, no? And then total का भी you should see, May में 5,000 shares you are getting, September में 5,000 shares you are getting. September का देखो कितने महीने outstanding, September, October, November, December, 4 months, 4 divided by 12. Now May से outstanding, May, June, July, August, September, October, November, December, 8 months, 8 divided by 12, right? If you multiply this and if you solve this, you will get 5,000. Perfect, no? So this is basic EPS. ये प्लस आउटस्टैंडिंग शेयर्स को ऐड करके इफ़ यू डिवाइड दिस नंबर विथ द अर्निंग्स, you will get EPS. So nothing to worry that is easy. You just need to know how to do these. It is easy. Go with the date. Okay, no? Perfect. Now we will come to diluted EPS. Diluted EPS क्या होता है, मतलब each and every quarter is treated as a separate independent reporting period. ठीक है. अगर कुछ भी कंडीशन these two conditions, कुछ भी कंडीशन अगर कौन सा भी क्वार्टर में if it is meeting those conditions in any of the quarter, it is considered as if those मतलब पूरा क्वार्टर के लिए it is outstanding. यहाँ पे अपन 2 divided by 3, 1 divided by 3 लिए ना, you should not take like that. You should consider that is outstanding for the entire quarter. ठीक है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज कमिंग इन मे. सेकेंड क्वार्टर में 5,000 इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड, सो यू विल नॉट कंसिडर एनी वेटेड एवरेज हियर. You will take entire 5,000 is outstanding for the entire period. That is the difference between dilution and basic EPS. तो सेकेंड वाला 5,000 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे 1st September which comes in third quarter. Okay, already 5,000 शेयर्स यहाँ पे है, that will go, and 1st September का कंडीशन भी मीट हो गया, 5,000 plus 5,000. क्वार्टर 4 में भी 5,000 plus 5,000, यहाँ पे भी 5,000 plus 5,000, राइट. सो दैट इज़ अबाउट कंटिजेंसी, डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड डाइल्यूटेड में यू विल कंसिडर दोज कंडीशंस हैव बीन मेट एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर इटसेल्फ, राइट. इट इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर द एंटायर क्वार्टर करके लेके यू विल कैलकुलेट द EPS. So each quarter is treated as an independent reporting period and hence conditions are fulfilled during the quarter. The contingent shares are considered for diluted EPS right from the beginning of the reporting period. That is important. Perfect. अभी contingency भी हो गया and अभी मैं बोल रहा हूँ ना, very important topic considering the जो भी नया क्वेश्चन ICAI फ्रेम कर रहे हैं ना, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट one question can come from this discontinued operations. पक्का श्योर, because this is a bit complicated and I want you guys to listen to this with utmost attention. चलो देखेंगे. देखो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस मतलब अगर मेरे पास 3 या 4 डिविजन्स हैं, ठीक है, एक डिवीजन लॉस मेकिंग है एंड आई वांटेड टू सेल इट, ठीक है, इफ़ आई कीप इट एज हेल्ड फॉर सेल और आई हैव सोल्ड इट ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलते हैं पहली बात. तो वेन एवर देयर इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस ना इनकम स्टेटमेंट में सेपरेटली दिखाना रहता हूँ. क्लियर. सो व्हेन यू शो its profit and loss separately in the income statement, you should also show its EPS separately so that it becomes easy. मतलब उसको separate कर देना, जो core business है तुम्हारा, जो discontinued business है तुम्हारा, it should be separated. That is also from investors point of view only. अगर ये loss making को भी अपने business में add कर दोगे ना, तो उसका net effect आपको थोड़ा, it will reduce your net effect. Okay, so if you separate these two and investors can see what is your core business and see what profits you are making there and what is its EPS, and it helps them to make a better investment analysis. Okay, so for that purpose standard बोलता है कि अगर तुम्हारे पास discontinued operation है, continued operation भी है, तो you have to show them separately. So even this example is there
actually there in the module. So this is the same question. Let's go. I'll help you understand with this question itself. So अपने पास कंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट है 30 lakhs, डिसकंटिन्यूड का लॉस है 36 lakhs, एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इज 10 lakhs. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट बेसिक में ना अपन कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स एंड ऑल कंसिडर नहीं करते, जितना आउटस्टैंडिंग है उसको ही लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखे तो कंटिन्यूड ऑपरेशन 30 lakhs डिवाइडेड बाई 10, वी गॉट 3. Clear no? Perfect. Now let's see what is discontinued operation. It is saying 36 lakhs loss divided by 10 lakhs. You got 3.6 minus 3.6, that is. Okay, since we are having loss. Now overall net effect कितना? minus 6 lakhs. 30 profit, 36 loss. minus 6 lakhs overall loss आ रहा है. And then you will take outstanding shares 10 lakhs. You are getting minus 0.6. Okay. So this is basic EPS. Perfect no? Now we should also calculate diluted EPS. I'll reduce a little bit. See diluted EPS में ना, if you see, we have considered this potential equity shares. यहाँ पे जो potential equity shares हैं, convertible equity shares, those that 2 lakhs also we will consider. 12. Numerator तो same है profit. 30 lakhs minus 36 lakhs, 30 lakhs minus 36 lakhs and minus overall minus 6 lakhs. तो if you do know, यहाँ पे बेसिक EPS में ना यू गॉट 3 रुपीज़. ओके, फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन. यहाँ पे डाइल्यूटेड में 2.5. देयर इज़ अ डाइल्यूटेड, रेड्यूस हुआ तो फाइन. डाइल्यूटेड EPS ऑलवेज इट शुड रेड्यूस, फाइन. यहाँ पे minus 3.6 है, यहाँ पे -3. ये रेड्यूस हुआ इंक्रीज हुआ, सो दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, रिमेंबर दैट पॉइंट. यहाँ पे -0.6 है, यहाँ पे कितना? -0.5. So whenever the figure is minus, no, if it is reducing, actually it means that it is increasing. ठीक है, तो diluted EPS if you see, no, it is actually increasing, right? So it has become anti-dilution. So whenever we discussed anti-dilution अगर होता है ना, तो whenever there is an anti-dilution, जो ये potential equity shares का है ना, it will not give effect to its potential equity shares. तो it will only consider basic EPS. ठीक है, whenever this basic EPS 0.5 है, it will report only this point. ठीक है, because of this potential EPS यहाँ पे increase हो रहा था value, but which is wrong. ठीक है, increase actually नहीं हो रहा था. तुम्हारा loss जो है because of those additional shares that you have issued or that will be issued in the future, वो मतलब allocate हो गया different equity shares में. ठीक है, इसके वजह से तुम्हारा लॉस जो है वो जो थोड़ा कम हो गया. या सो दैट इज़ नॉट फेयर प्रेजेंटेशन. सो द स्टैंडर्ड सेज whenever anti-dilution effect is there, I'm talking in case of this discontinued operations. Whenever there is a discontinued operation और तुम्हारा anti-dilution effect आ रहा है यहाँ पे, if you see -0.6 and -0.5, you should see what is the effect on control number. यहाँ पे कंट्रोल नंबर बोल के एक चीज़ आता है. ठीक है, वी विल कंसिडर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज कंट्रोल नंबर. वी विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन कंट्रोल नंबर. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 हो, वहाँ पे तो डाइल्यूटिव हो रहा है, एंटी डाइल्यूटिव नहीं हो रहा है. तो वी वोंट बॉदर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एंड ओवरऑल. ओके, कंट्रोल नंबर में जो हो रहा है वही देखेंगे. अगर कंट्रोल नंबर में एंटी डाइल्यूशन इफेक्ट आ रहा है, देन वी विल नॉट टेक द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. क्लियर नो? सो कंटिन्यूड ऑपरेशन इज ट्रीटेड एज कंट्रोल नंबर. वो एक ही को देखना, बाकी पूरा अगर इंक्रीज भी हो रहा है ना, तो वी विल रिपोर्ट दैट ओनली. वी विल रिपोर्ट दिस ओनली 0.5. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट कंटिन्यूड ऑपरेशंस. ठीक है, सो देयर इज अ डाइल्यूशन इन बेसिक EPS फॉर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन. तो देयर इज अ डाइल्यूशन, रेड्यूस हो रहा है ना, 3 से लेके 2.5 हो रहा है. It is reducing, and then therefore even though there is an anti-dilution 0.6 or 0.5, even though there is an anti 0.6 से लेके 0.5, we will report diluted loss 0.5 is reported. This 0.5 is actually reported. I hope I've covered all the topics from this Ind-AS 33 chapter. I hope this was helpful. We have completed this standard in like 40 minutes or something. In case if this standard was helpful, please do like and subscribe to the channel. Thank you so much guys, and more revision videos will be coming in the future, and let's go. Thank you so much.